Today we are going to discuss the topic derivative. In this topic derivative, the student will able to state and use the standard formulas of the derivative of a standard function. Then the concept of chain rule of derivative, how to use the chain rule of derivative. Then find the derivatives of the logarithm, implicit, inverse and parametric function. Find the second order and higher order derivative. First, I will tell what is the geometrical interpretation of derivative. What is the geometrical meaning of derivative? Consider the point P. Consider the point P on the curve. Let y is equal to the f of x be a function, and suppose this is a curve, and suppose this is a curve. At point x is equal to a, coordinate of the point P is a comma f of a. Q be the another point on the curve a little to the right of the P and to the right of x is equal to a with the value by a small real number h. Therefore, the coordinate of Q. Suppose this point is a comma a. Then by adding a suitable real number h, then the point Q is a plus h comma f of a plus h. Then you get the 2 point. This is a chord PQ on the curve, on this curve. Then we have to find out the slope of this second line. We have to find out the slope of this second line. You know the slope means the difference between the two y coordinate divided by the difference between the two x coordinate. Then take the difference between the y coordinate. What is y coordinate? F of a plus h minus f of a upon a plus h minus a. Clear? Means this is the slope of PQ. Slope of PQ means y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then denominator contain a plus h minus a. This a and this a get cancelled. This is the slope of PQ. Then suppose we may make the h is a smaller and smaller. Then a plus h approaches to the a and the h gets closer to 0. Q will approaches to p as h tends to 0. The second converges to the tangent at point P. Suppose this distance is a smaller. A plus h is a smaller and smaller means this point Q is towards the P. Then a limit of a Q tends to the P, the slope of the second PQ, then a limit of h tends to 0. As the point Q approaches to the point P, the h become very smaller and it reaches to 0. Therefore, the limit is a limit of h tends to 0. F of a plus h minus f of a upon h is equal to, this is nothing but f dash of a. This can be denoted by f dash of a. Then slope of a tangent at point P. Slope, then as the point h closes to the 0, then PQ become the tangent at point P. Thus the derivative of the function y is equal to the f of x at any point P x1 y1 is the slope of the tangent at the point on the curve. Means what is the geometrical interpretation of the derivative? Geometrical interpretation of the derivative, it is nothing but the slope of the tangent to the given curve. Slope of the tangent to given curve. If we consider the point a minus h to the left of a and h greater than 0, then with r a minus h comma f of a minus h, we will find the slope of the pr, which also converges to the slope of the tangent p. Means this shows that the what is the geometrical interpretation of the derivative? It is nothing but the slope of the tangent at point P. Then f dash of h means this can be written as f dash of h, and this can also be written as a dy by dx. Dy means change in y and dx means change in
x. Therefore, the change in y upon change in x, it is nothing but the slope of the tangent to the given curve. Clear? And it is also represented as a dy by dx. In general, derivative is denoted by dy by dx is also is equal to f dash of x is also is equal to f dash of x. It is also is equal to dy by dx is equal to f dash of x. Clear? I have already discussed the geometrical interpretation of the derivative. Now, these are the various formulas of the derivative. Formulae. These are the various formulas of the derivative. Suppose y is equal to the f of x. Then what is the derivative of constant? Derivative of constant is a 0. Dy by dx is equal to f dash of x. Then what is the derivative of x raised to n? Derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. Then what is the derivative of 1 by x? Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Then derivative of 1 upon x raised to power n. What is the derivative of 1 upon x raised to power n is minus n upon x raised to n plus 1. You have to remember all these formulas. What is the derivative of root x? Derivative of root x is 1 upon 2 root of x. What is the derivative of sin x? Cos of x. Derivative of cos of x minus sin of x. Tan of x sec square x. Then what is the derivative of sec x? Sec x tan x. What is the derivative of cosec x? Cosec x minus cosec x into cot of x. What is the derivative of cot of x? Minus cosec square x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log of a. Derivative of log of x is 1 by x. Derivative of log of x to the base a is equal to 1 upon x into log of a. Means these are the derivatives, means this is a function and derivative. Then this can also be written as, you have to remember all these formulas. These are the all the formulas in derivative. Means d by dx of x is equal to the 1. D by dx of x raised to n is n x raised to n minus 1. Then a d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Then a d by dx of root of x, d by dx of root of x is 1 by 2 root of x. Then a derivative of sine of x is a cos of x. Means this is a first algebraic form, then this is a trigonometric form. There are the total 6 trigonometric ratios. Means this is a exponential form. Then inverse, there are the total 6 inverse trigonometric functions. You have to remember all these formulas. Then next is, there are the various rules of the derivatives. Suppose d by dx of u plus or minus v means addition or the subtraction of the two function, then taking the separate derivative of each function. D by dx of u plus or minus v, then du by dx plus or minus dv by dx. Then d by dx of uv means, if the suppose you have to find out the derivative of the product, d by dx of uv, u into dv by dx plus v into du by dx means this is a product rule. While solving the problem, you have to apply this rule. How to apply? Derivative of a product of the two function first into derivative of second plus second into derivative of first, means this is a product rule. Then quotient rule. Quotient rule means derivative of quotient of the two functions. Suppose the numerator contain one variable and the denominator contain another variable, then what is the derivative? Then a quotient rule, v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. This is a quotient rule. Then chain rule. Chain rule is dy by dx is equal to dy by du into du by dx. This is a chain rule. Then inverse function, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. And then parametric functions, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. We have already studied the u plus or minus v, u into v and a quotient rule in 11th standard. In a 12th standard, there are the total 3 rules, a chain rule, parametric function and inverse function. Now first we discuss the chain rule. एग्जाम में चेन रूल का थ्योरम्स आता है, तो वो पहले हम चेन रूल का थ्योरम देखेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस ऑल द थ्योरम्स इन द डेरिवेटिव्स.
Then first theorem is y is equal to f of u is the differentiable of u. Suppose y is equal to the f of u is a differentiable function of u, and u is equal to g of x is a differentiable function of x, such that the composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. This is a statement of the chain rule. Now see the proof of this the chain rule. Suppose y is equal to the f of u and u is equal to the g of x. These are the two functions. Then we assume that u is not a function, u is not a constant function, means u is not a constant function. Then be a small increment in the values of x, say del x, then del u and del y be the corresponding increment in u and y respectively. तो हर एक प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, देखो, you have to add the small increment. Del x is a small increment in x, del u is a small increment in u, and del y is a small increment in y. Then these are the small increment in x, u and y respectively, such that del x is not equal to the 0, del u is not equal to the 0, and del y is not equal to 0. तो कंसेप्ट क्या है, देखो, जो हमें प्रूव करना है, सपोज dy by dx is equal to dy by du into du by dx, ये हमें प्रूव करना है. Then this can be written in curly, means del y by del x is equal to del y by del u into del u by del x. Now see the concept. Del y by del u, this is a del y by del u. Del y by del u can be written as, this is a del y, and del u can be written in cross. So this is a del y by del u. Then here you have to multiply du and du, means del y by del x is equal to del y by del u into del u by del x. You have to write this concept. Now see the concept. Del y by, sorry, this is a del y by del x. Del y by del x can be written as del y by del x. तो ये क्या है, देखो, डेल वाई बाय डेल एक्स क्रॉस में लिखना है, क्लियर. और दिस डेल यू बाय डेल एक्स, दिस डेल यू गेट कैंसल, देन डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू द डेल वाई बाय डेल एक्स. तो ये ऐसे हमें लिखना है, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इनटू डेल यू बाय डेल एक्स. Then taking the limit as a del x tends to 0 on both side, taking the limit as a del x tends to 0 to both side, taking the limit as del x tends to 0, then limit of a del x tends to 0, del y by del x is equal to limit of del x tends to 0 del y by del u into limit of del x tends to 0 into del u by del x. तो पहले हमने क्या किया है, देखो, taking the limit on both side as del x tends to 0, but as del x tends to 0 del u tends to 0. तो यहाँ पे हमने del x लिखा है, then del x changes to del u, del x changes to del u. Clear? हाँ, तो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ, यहाँ पे डेल एक्स है, ये डेल एक्स चेंजेस टू डेल यू, एज डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू टेंस टू जीरो. Suppose y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, then limit of a del u टेंस टू जीरो del y by del u. ये जो एक मैथमेटिशियन है लेबनीज, by the Leibniz definition of the derivative, if we take the limit of del u tends to 0 del y by del u, then it becomes the dy by du, and the limit of del x tends to 0 del u by del x is equal to du by dx. तो del का अगर हम लिमिट लेते हैं, then it becomes the du. This is by Leibniz definition of डेरिवेटिव. ये जो फार्मूलीज है वो फार्मूलीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, then this becomes dy by du into du by dx. And the left hand side, if the RHS exist, अगर RHS exist होता है, then LHS is also exist, and this formula by the Leibniz definition of the derivative, limit of del x tends to 0 del y by del x is equal to dy by dx. Therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx. This is a chain rule.
हाँ, then first rule is chain rule. These are the standard formulas of the derivative while solving the problem. These are the standard derivative. Then a derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. Then a derivative of sin x is cos x. But while solving the problem, the x changes by f of x. Then you have to remember this formula. Derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. तो इतना याद रखना है, लेकिन मुझे f of x raised to n इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? n into f of x raised to n minus 1. Then take the derivative of f of x. Take the derivative of f of x. तो यहाँ पे क्या लिखा है? f dash of x. ये फार्मूला याद रखना है while solving the problem. x raised to n के जगह एनी फंक्शंस रहेगा, you have to apply the formula for x raised to n. What is the formula for x raised to n? n x raised to n minus 1. लेकिन x के जगह other functions रहेगा f of x. Then take the derivative of that function. f of x का डेरिवेटिव कितना आएगा? f dash of x. रूट x का मैंने फार्मूला ऊपर दिया है, रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट ऑफ x, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो f of x रहेगा. Then what is the derivative of root f of x? 1/2 root f of x. Then take the derivative of f of x, means f x के जगह जो फंक्शन है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. ये कंसेप्ट है. x के जगह जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x? f डैश ऑफ x. देन 1/f ऑफ x रेज टू n. तो ये सब फार्मूलीज, ऊपर के जो फार्मूलीज है मैंने वही लिखे हैं, लेकिन ये जो फार्मूलीज में साइन x के जगह साइन f ऑफ x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos ऑफ x. तो साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा? cos f ऑफ x. लेकिन फिर से f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, फिर से f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स. फिर से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स. चेन रूल का कंसेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसमें एक्स के जगह अदर फंक्शन रहेगा. First you have to apply the standard formulas. After applying the standard formulas of the derivative, then take the derivative of f of x. Take the derivative of f of x. सभी formulas में ये apply करना है. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो और एक इनवर्स फंक्शंस लेते हैं और फिर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे. इनवर्स फंक्शन का थ्योरम देखते हैं. Then a theorem y is equal to the f of x is a differentiable function of x on an interval I and y is 1 1 on 2, and dy by dx is not equal to the 0 on the interval I. Also f inverse of y is a differentiable on f of I. Then d by dy of f inverse of y is equal to 1 upon f inverse of x, or dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. एग्जाम में थ्योरम्स आते हैं. फर्स्ट थ्योरम इज अ चेन रूल, और जो सेकंड थ्योरम है इनवर्स फंक्शन, और जो थर्ड थ्योरम है पैरामीट्रिक फंक्शन. तीनों में से एक थ्योरम फाइनल एग्जाम में कंपलसरी आएगा. तीनों में से एक थ्योरम फाइनल एग्जाम में कंपलसरी आ जाएगा. तो वो स्टेटमेंट क्या है? जो स्टेटमेंट है उसका हमें डी 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 के जगह डे लिखना है. ये कंसेप्ट है. ये जो स्टार्टिंग का जो गिवन स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखना है. y is equal to the f of x and x is equal to the f inverse of y are the differentiable function. ये एज इट इज है. तो इसमें हमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डेल x डेल y. तो वो जो डेल x एंड डेल y वो लिखना है. वो कैसे लिखना है? देखो, डेल x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x and del y is a small increment in y. Small increment in x वो जो हम है वो del x लेंगे, and corresponding increment in value of y say f of y. तो del x and del y be the increment. The condition is del x is not equal to the 0 and del y is not equal to 0. तो ये कंसेप्ट क्या है? देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखना है, लेकिन वो डेल में लिखना है. एग्जाम में मैं ये ट्रिक बोलता हूं कैसे करना है. ये डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जो स्टेटमेंट देते हैं वो सिर्फ डेल में लिखना है. ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो डेल में लिखना है. ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो मैं पहले डेल एक्स बाय डेल वाई लिखूंगा. ये जो है डेल एक्स बाय डेल वाई, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? देखो, डेल वाई बाय
डेल एक्स इज इक्वल टू 1, यही यहाँ पे लिखा है। डेल एक्स बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो टर्म है तो रिवर्स में लिखना है, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखना है। ये डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स, वेयर डेल वाई बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू द जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। टेकिंग द लिमिट एज अ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, टेकिंग द लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों जगह लिमिट लिखना है। और लिमिट का वैल्यू क्या है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई टेंड्स टू जीरो, लेकिन यहाँ पे डेल वाई है तो डेल एक्स की जगह डेल वाई लिखना है, ये डेल एक्स एज इट इज। तो ये लेबनिज डेफिनेशन है, लेबनिज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम डेल का लिमिट लेते हैं इट बिकम्स डी, तो राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा ये जो है वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है। लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कंडीशन है डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। आर एच एस एग्जिस्ट है, आर एच एस एग्जिस्ट है, आर एच एस एग्जिस्ट है तो एल एच एस भी एग्जिस्ट होगा। तो एल एच एस का क्या लिमिट है, लिमिट ऑफ डेल वाई टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देयरफॉर dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। हमने अभी दो डेरिवेटिव्स के स्टेटमेंट लिए, चेन रूल एंड इनवर्स फंक्शन। नाउ एक्सरसाइज डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट स्टेप है लेट अस डिनोट द गिवन प्रॉब्लम एज y इज इक्वल टू गिवन प्रॉब्लम लिखना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू पावर 5। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा है, x रेस टू n, तो f ऑफ x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई करना है यूजिंग d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x रेस टू n। f ऑफ x रेस टू n का फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x रेस टू n। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेस टू n इज n f ऑफ x रेस टू n minus 1 into f dash of x, n minus 1 into derivative of f of x d by dx of f of x। ये चेन रूल का कंसेप्ट है, चेन रूल से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो dy by dx कितना होगा, देखो dy by dx is equal to dy by dx is equal to x रेस टू n, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू पावर 4। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n x रेस टू n माइनस 1, ये फार्मूला अप्लाई किया पहले। देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, देन आंसर इज 5 x क्यूब minus 2x minus 1 raised to 4 into derivative of x cube, derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1, derivative of x cube is a 3x square, then a derivative of 2x, derivative of 2x is a 2, derivative of 2x is a 2, and the derivative of 1 constant, derivative of constant is a 0, derivative of constant is 0, derivative of constant is 0। y is equal to, let us denote the given problem as y, let us denote the given problem as y, y is equal to 2 x raised to power 3 by 2 minus 3 x raised to power 4 by 3 minus 5
raised to power 5 by 2. Then differentiate with respect to x. ये एक स्टेटमेंट लिखना है ना, differentiate with respect to x, ये स्टेटमेंट लिखना है. differentiate with respect to x. तो dy by dx कितना होगा? dy by dx first apply f of x raised to n 5 by 2 2x raised to power 3 by 2, this bracket as it is, no change, this bracket as it is, no change, raised to power 5 by 2 minus 1, 5 by 2 minus 1 means a 3 by 2. Then take the derivative of that bracket, take the derivative of that bracket, 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5 raised to power 5 by 2. Then 5 by 2 means this bracket as it is, 2x raised to power 3 by 2 minus 4x raised to power 4 by 3 minus 5 raised to 3 by 2 into, then take the derivative of this term, then two constant outside, then x raised to n, derivative of x raised to n is, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लेना है? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, तो 3 by 2 में से एक माइनस करना है, तो ये 1 by 2 आ जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट आउटसाइड, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n 4 by 3, 4 by x रेज टू n मींस 4 by 3, x रेज टू पावर 4 by 3 minus 1 मींस 1 by 3 आएगा, 1 by 3 माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 by 2 इंटू ब्रैकेट 2x रेज टू पावर 3 by 2 माइनस 4x रेज टू पावर 4 by 3 माइनस 5 रेज टू पावर 3 by 2, देन सिंप्लीफाई 2 get cancel, 3x रेज टू पावर 1 by 2, 3 get cancel, 4x raised to power 1 by 3. हाँ, थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. लेट अस डिनोट द गिवन प्रॉब्लम एज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x minus 7. Then take the derivative dy by dx, differentiate with respect to x. पहले लिखना है differentiate with respect to x, then dy by dx is equal to root x. What is the derivative of root f of x? रूट एक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इज रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन ये फंक्शन एक्स नहीं है, अगर फंक्शन अदर देन एक्स है तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा. देन टेक द डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4x
is a 4. Derivative of 7 constant 0. This is the derivative of under root of x square plus 4x minus 7. फिर से देखना है, रूट एफ ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव लेना है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स. ये जो फंक्शन है, जो एफ ऑफ एक्स रहता है, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. x raised to n x raised to n minus 1 means 2x. Then 4 constant outside, derivative of x is 1, then the answer is 2x plus 4. Then take the 2 common in bracket x plus 2 means ये simplify कर सकते हैं, नहीं तो फिर as it is भी लिख सकते हैं. तो 2 get cancel, take the 2 common and 2 get cancel. Final answer is x square plus 4x minus 7. कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो सबको. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ. लेट अस डिनोट द गिवन प्रॉब्लम एज y. टेक द 2 कॉमन और y is equal to under root of, here take the 2 common and 2 get cancel and then x plus 2 upon x square plus x square plus under root of x square plus 1. तो ये देखो कैसे करना है. फर्स्ट अप्लाई एफ ऑफ एक्स. ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है. देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये dy बाई डी एक्स कितना होगा? देखो dy बाई डी एक्स. टेक द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 अंडर रूट ऑफ x square plus under root of x square plus 1. Then take the derivative of, जो फंक्शन रूट में रहता है उसका डेरिवेटिव लेना है. फिर से रूट नहीं कंसिडर करना है, लेकिन रूट में और एक रूट है वो लिख सकते हैं. वो रूट में और एक रूट है तो वो लिखना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन एक जो पूरा रूट है वो नहीं लिखना है. 1/2 रूट ऑफ एक्स ये पहले लिखना है. 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. अगेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है. तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है. यहाँ पे चेन रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा. टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डायरेक्ट लिख सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ इज 1. दिस 2 and this 2 get cancel. Clear? This 2 and this 2 get cancel. Then 1/2 under root of x square plus under root of x square plus 1. These 2 as it is and these 2 get cancelled. 2x as it is. These 2 and these 2 get cancelled. These 2 and these 2. No. You have to write down like this. X upon under root of x square plus 1